कुतुब मीनार मामले में बड़ी खबर। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट में सुनवाई, साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई है पूरी। कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। मामले में 9 जून को आएगा आदेश। तब 9 जून का इंतजार रहेगा जब इस पूरे मसले को लेकर के आदेश आएगा। क्या कुछ अहम फैसला कोर्ट ने लिया है। हालांकि अभी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, पर इंतजार अब सभी को 9 जून का है जब फैसला सभी के समक्ष आ जाएगा और ये भी बात सामने आ जाएगी कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। कुतुब मीनार मामले में ये बड़ी खबर। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट में सुनवाई, साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट ने आदेश रखा है सुरक्षित। अब मामले में 9 जून को आएगा आदेश। मामले में 9 जून को आदेश आएगा। अब 9 जून का सभी को इंतजार है कि क्या कुछ अहम फैसला 9 जून को आएगा। कुतुब मीनार मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले में 9 जून को आदेश आएगा। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि 9 जून को क्या आदेश कोर्ट का सामने आता है, क्या कुछ कहा जाता है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज की सुनवाई के दौरान कौन कौन से तथ्य अहम रहे, कौन कौन से पल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, तो वहीं आदेश का सभी को इंतजार है। जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में इशू चल रहे हैं सभी जगह वो लगभग एक जैसे ही हैं। अब कुतुब मीनार को लेकर भी जो एक पुराना आदेश था उसको चुनौती लेकर जो विचाराधीन याचिका थी उस पर आज सुनवाई हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कुतुब मीनार जो है वह हिंदू और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर मूर्ति स्थापित है, तो वहाँ पर जो है जो धर्म के जो जुड़े हुए लोग हैं उनको वहाँ पर पूजा का अधिकार दिया जाए और उस जगह पर सर्वे एएसआई का किया जाए। उस तरीके की सारी बातें रखी गई थी, जिसमें पूजा स्थल एक्ट कानून का भी बात रखी गई थी। वहीं जो एएसआई है उन्होंने ये कहा था कि ये जो क्षेत्र है कुतुब मीनार का, यह उस एक्ट के अधीन नहीं है और ये सारी चीजें जो। गौरव, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार सुन लेते हैं। Cannot be changed. That was one question which was answered. The second question which came was that whether this restoration of the character, the so-called restoration, okay, that whether the Qutub Minar now can be called as a place of worship or not, and therefore restored to the Hindus, because according to the plaintiff, Hindu deities and Hindu idols or Hindu and Jain temples were demolished. The short answer to that is that yes, there is an inscription on the Qutub Minar itself that the remains of 27 temples were used, but it is nowhere available in the records that the remains were the material which was used in the building was from the temples or not, or whether the material was brought from outside or not. To the argument that there is a iron pillar or Garud Stambh, there is no evidence whether this existed at that place or was brought later on, but much before history. My submission to the court was that if a place of protection has continued for 800 years without any disruption, then that should continue. And to the contention that under Article 25 and Article 26, under Article 25 and 26, there is a fundamental right for worship by the people. The answer is yes, there is a fundamental right, but that is not absolute right as pointed out by the Honorable Supreme Court in several decisions. My name is Dr. Subhash Gupta. बता दूंगा, इंग्लिश वाले हट जाए। तो साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है और मुद्दा यही, क्या कुतुब मीनार में पूजा की जा सकती है। तो आर्टिकल 25 और 26 का जिक्र भी इसमें किया गया कि फंडामेंटल राइट्स में कह सकते हैं कि वर्शिप का हमें अधिकार है, पूजा का हमें अधिकार है, पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। Any excavation takes place or whenever there is a monument, then the idols or the images or the signs and symbols of several regions can be found. Okay,
So that is not denied, that whether they are there or whether they are not there. And this is true not only of Qutab Minar, but it's true of many monuments in the country. Okay? What point of law is the order to come out on that? Wait a minute. Wait a minute. To your question as to whether the idols will be removed, restored or something, I would say that a monument is like a poem engraved in stone. If you tinker with any word in a sentence, you change the entire rhythm of that poem. And therefore, you will find that there are many monuments in the country where the idols or the images are either in a damaged condition or they are in a different position than we think. Okay? So that is the question. So you're effectively saying that the ASI believes that there should be no change whatsoever, no restoration, तो मामले में 9 जून को अब फैसला आएगा। 9 जून का इंतजार सभी को रहेगा। क्या पूजा करने की अनुमति कुतुब मीनार में मिल पाएगी? एक बड़ा और अहम सवाल अब इसी को लेकर देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट की ओर से क्या आदेश दिया जाता है।